Hello everyone. Good afternoon. Guys, am I audible? Open क्यों? Hello guys, am I audible? Yes, sir. Cool. Yes, क्या हो sir. गया? सैटरडे मूड में हो सब लोग? नींद में ही हो, अभी तक उठे नहीं हो क्या? सब नींद में लग रहा है मेरे को। उठ जाओ। मैं भी थोड़ी देर पहले ही उठा भाई। 3 बजे तक जग रहा था मैं। You guys have work, like people who are working have Saturday also working? या फिर यहाँ पर कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है? Those who are working. ठीक है, so let's get started. कोई क्वेश्चन है क्या प्रीवियस चैप्टर से, प्रीवियस लेक्चर से किसी को? और हाँ, एक चीज और पूछना था, डू यू गाइस वांट रिवीजन क्लास? नॉट रिवीजन एक्चुअली, डाउट क्लास। बताओ। हेलो Sir, please say it. I was saying that you guys want backup class, that doubt class. Yes, sir. Yes, sir. So आप लोगों का डाउट कंसोलिडेट करके रखे हो आप? Yes, sir. Decide the day we will come with our doubts. अच्छा चलो ठीक है. So what we can do, we can take the doubt session at Sunday. चलेगा क्या कल? Everyone, can we take tomorrow? Yes, no, anything guys? So can we take it on Monday or Tuesday? Okay, let's take it on Tuesday then. कल ऑफ ही रखते हैं. You guys prepare, देखो सारे टॉपिक्स को, सारे पीपीटीज को एक बार, और फिर जो डाउट आता है we can take it up on Tuesday. ठीक है, क्योंकि एक क्लास और बचेगा अजाइल के बाद. आज की क्लास के बाद एक और क्लास बचेगा. Then after that you will be able to complete manual testing, and फिर then we can take the doubt class. ठीक है, चलो.
ठीक है, चलो अजाइल स्टार्ट करते हैं। तो अजाइल का हम लोगों ने वर्क फ्लो पढ़ा था। We have gone through the workflow of Agile and we have understood how can we complete the whole project in a shorter duration of time and how we are overcoming the drawbacks of waterfall model, currently used waterfall model workflow। ठीक है, वो पढ़ा था, उस पर कोई किसी को दिक्कत? Yes, no, anything? Anyone have any questions regarding that particular workflows and workflow of Agile and waterfall model? No? Yes? ओके, चलो ठीक है। तो अब अजाइल पे आते हैं। तो अजाइल का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये समझ लो, अजाइल व्हेन वी आर गोइंग थ्रू अजाइल, ना अजाइल कम्स विद ओन टर्मिनोलॉजी, अजाइल कम्स विद ओन प्रोसेस एंड ओन टर्मिनोलॉजी व्हिच इज स्पेसिफिक टू अजाइल। अजाइल ने खुद बनाया है, दे डोंट कॉल इट रिक्वायरमेंट, दे कॉल इट एपिक, ऐसे करके ना दे हैव देयर ओन टर्मिनोलॉजीज। इन ऑर्डर टू follow this particular model you should be familiar to these kind of terminology. So very first thing is epic. Agile, the whole project, not agile, the whole project starts with an epic. What is an epic? Epic is a whole chunk of requirement. जो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ना, A to Z requirement, A to Z requirement, A to Z requirement. What was that A to Z requirement? A to Z requirement is actually what the whole requirement of the whole project itself, right? अगर कोई पूरा प्रोजेक्ट, सिटी बैंक एक प्रोजेक्ट आया है जहां पर तुमको बैंक के बहुत सारे फीचर्स बनाने हैं, तो whole requirement of that Citibank project can be considered as an epic, or it can be into multiple epics. But what is an epic? Epic is basically a whole chunk of requirement, huge chunk of requirement given by the customer. ठीक है, सबको समझ में आ गया? in a better smaller explanation you can say that in agile we don't call it as a requirement, we call it as a epic. Now in agile we have gone through and we have understood that we don't used to deliver the whole project at one go. हम लोग एक बार में पूरी requirement deliver नहीं करते हैं। तो what we used to do, we used to divide the requirement in small pieces and then we used to deliver it to the customer. If this is an epic and this is the requirement, what should be our next step? Next step is to divide the requirement, correct? Divide the requirement in small pieces. So that's what they do. Very first thing, they collect the requirement and they used to call it as an epic. And then they used to do what? They used to divide this epic into product backlog. अब प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है? दोज हु आर फ्रॉम इंजीनियरिंग उनको पता होगा बैकलॉग क्या होता है। तो दोज हु आर नॉट फ्रॉम इंजीनियरिंग मैं बता रहा हूँ बैकलॉग क्या होता है। बैकलॉग इज बेसिकली अ पेंडिंग वर्क व्हिच यू नीड टू क्लियर इन अ फ्यू शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, तो बेसिक आइडिया इज दैट ये पेंडिंग चीजों के लिए बैकलॉग वर्ड यूज होता है एंड इट इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट बैकलॉग। सो व्हाट डज दैट मीन? Product backlog means basically that amount of work which you need to do in your native future, like not that far basically, right? You have to do it, you have to complete this particular amount of work of that particular product in your near future. Okay, so what is the first step? We collect all the requirement, we create epic, and basically after that epic needs to be broken down into product backlog. Now who used to do this work? कौन break down करेगा epic को product backlog में? Your project manager, your architect, your business analyst, your customer will all sit together and create a product backlog. These all are documents. epic भी एक document होगा, epic से जो product backlog निकलेगा वो भी एक document ही होगा. Now if you can see that this product backlog consider few modules requirement. Insurance module requirement, under insurance module you have health insurance, vehicle insurance, life insurance, and loans module. Under loans module we have home loan, personal loan, vehicle loan, and similarly you can have multiple modules. Under that sub modules will be there, and individual feature also will be there. Apply for health insurance, renew health insurance balance, apply for repay health insurance, something like that. So you might have multiple feature under multiple module and sub module. So they will do what? If this particular product backlog have multiple modules requirement, they will break down this particular requirement in small piece called product backlog.
wherein you have multiple modules, submodule, and under that submodule will have requirement of multiple features. समझ रहे हो? इतना समझ में आया सबको? क्या होता है? Yes, sir. Epic needs to be broken down into product backlog. Who will do that? Project manager, architect, business analyst, customer, and basically there will be one more guy. One more guy who someone called as product owner. That also will be there. Okay? And this particular feature we call it as feature ना. देखो ये apply for home loan होगा. Apply for home loan होगा. एक feature है ना ये. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? Feature बोलते हैं. Correct? तो ये जब रिक्वायरमेंट के फॉर्म में होगा ना, वी यूज टू कॉल इट एज यूजर स्टोरी और स्टोरी कार्ड. क्या बोलते हैं अजाइल में? अजाइल में वी डोंट कॉल इट एज अ फीचर रिक्वायरमेंट, वी कॉल इट एज अ यूजर स्टोरी और स्टोरी कार्ड. दिस इज दिस इज अ जेनरिक टर्म यूज इन अजाइल फॉर इंडिविजुअल फीचर रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? यूजर स्टोरी और स्टोरी कार्ड. So far what is the process? First, Epic will be there. It will be broken down to product backlog. Product backlog will have multiple modules. Under that module, multiple sub modules or user story or story card will be there, individual. So when they used to create this product backlog, no, they don't just pull some amount of work or break down Epic into just pieces. They don't just do it like they have to do it for the division. They don't just do it for the division sake. They do it and also they do divide it and also prioritize it. देखो सिर्फ ब्रेक डाउन नहीं करते हैं, ब्रेक डाउन करने के अलावा दे also prioritize this product backlog. Prioritize मतलब क्या? Prioritize means they give the priority to the modules and also sub modules, even the story card. कि हमको ये पहले बनाना है, कि ये पहले बनाना है, कि ये पहले बनाना है. ये अगर ये कोर बैंकिंग पहले बनना है तो कोर बैंकिंग में कौन सा फीचर पहले बनेगा, उसके बाद कौन सा बनेगा, उसके बाद कौन सा बनेगा. So what they used to do, they used to create a product backlog which will have some piece of work, and also they will do what? Also they will prioritize what module needs to come first, develop first, what module needs to develop next. Also under that module, what feature, what story card needs to pick first and what story card needs to pick after that. ठीक है, समझ गए सब लोग? Yes. And who all will be involved in this activity? Project manager, architect, business analyst, customer, and someone called as product owner. अभी इसमें से तुम ज्यादातर लोगों को जानते हो, तुमको मैंने मिलवाया हुआ है, राइट? प्रोजेक्ट मैनेजर को तुमको पता है प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होता है, हु हैंडल होल प्रोजेक्ट. आर्किटेक्ट कौन होता है? who is mostly responsible for the tech feasibility of the project and also involved in designing part. Business analyst will be involved in like basically collecting requirement from the customer side, and customer you already know kaun hai customer, those people who gave you the project, right? who wants the software basically. Now there is one more person called product owner. उसके बारे में हम चलते चलते बात करेंगे, ठीक है? Give me a second, guys. Okay. Okay, let's go to next part. Now, basically, once this product backlog is created and also prioritized, now आपके पास क्या है? आपके पास ये पूरी requirement है. आपने उसको requirement को small pieces पे break down कर लिया. अब what should be the next step? You have the amount of work ready with you. You want to create a product out of that particular work. So what do you need? You need labor, correct? अभी देखो तुम अगर घर बनवा रहे हो, if you are trying to construct a building and you have your land ready, you have your raw material ready, what should be the next step? What you need next? You need labor in order to work on that particular land, utilize the raw material. This is the raw material. Requirement is the raw material. In order to create a software out of it, you need a team. You need a development team and you need a testing team, correct? So that's the next step. They used to create Scrum teams. What is Scrum team? Scrum team is created by project manager. Scrum team is exactly that particular team which will work on the requirement and create a software out of it. So what is a Scrum team? Scrum team is a team
which will work on the requirement and create an output for you, create a software out of the raw requirement. ठीक है. Now coming up to Scrum team normal team नहीं होती है. जैसे आप अगर किसी भी प्रोजेक्ट में जाओगे, so you will see a team. There will be one development team, there will be one testing team, and that's it most of the time. And there will be some other teams like database team, and then there will be some DevOps team. There will be different teams, and they're segregated depending upon their work, right? But Scrum team is a unique, like basically specific to Agile only. It is used in Agile only, and it is designed in such a way that it will be helpful for you to collaborate with other teams, like other particular Scrum teams who are working in their own product backlog. Okay, in their own product backlog. Similar to, for an example, we are team A. This is the Scrum team A. Now, if we are tagged in this product backlog, this is one product backlog, right? This is not whole project. This is not whole project, basically. So this epic will be broken down into multiple product backlog, isn't it? This is one. There will be many more. Like there will be a few more, like for an example, KYC module or something like that, right? It is loans and insurance. There will be multiple other functionalities in the banking software. So basically, if we are handling these modules, there will be other software requirement also, which will be handled by other team. There will be other product backlog, and there will be other team tagged to that particular product backlog. So basic idea is that Scrum team is being designed in such a way that you can basically easily collaborate with other particular team. You can easily work hand in hand with other particular Scrum teams. Why? Because you already know, right? We have to start our whole our piece of work at the same date and end our piece of work at the same date. As we are working multiple teams, we have to start and we have to end our work at same date so that we can deliver a huge chunk of work at a shorter duration of time. जैसे हम लोगों ने वर्क फ्लो पे समझा था, isn't it? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Okay, so basic idea is that जैसे यहाँ पर एक प्रोडक्ट बैकलॉग बनी, करेक्ट, इस एपिक से. तो एपिक में तो बहुत सारे मॉड्यूल होंगे. ये तो 3 ही मॉड्यूल है ना, इंश्योरेंस मॉड्यूल है, लोन मॉड्यूल और कोर बैंकिंग मॉड्यूल है. ऐसे ही बहुत सारे दूसरे भी मॉड्यूल होंगे ना, जैसे टिकट बुकिंग होगा, बेसिकली फ्लाइट बुकिंग होगा, ट्रेन बुकिंग होगा, वगैरह वगैरह. तो अगर अलग अलग मॉड्यूल होगा, करेक्ट. So if you see different module, there will be a different product backlog for that, correct? एक प्रोडक्ट बैकलॉग ही है, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट बैकलॉग होंगे. अब तुम टीम क्रिएट कर रहे हो, यू आर क्रिएटिंग स्क्रम टीम. सो दिस विल बी वन स्क्रम टीम टैग टू वन प्रोडक्ट बैकलॉग, करेक्ट. एंड दूसरे प्रोडक्ट बैकलॉग के लिए दूसरे टीम क्रिएट होगी, करेक्ट, इजंट इट? तो ऐसे ही मल्टीपल स्क्रम टीम होती है, मल्टीपल प्रोडक्ट बैकलॉग से टैग्ड होती है वो लोग, करेक्ट. So basic idea is that when there will be multiple team, this Scrum team is designed in such a way कि तुम वो सारी multiple team से आराम से एक साथ मिलके काम कर सको. ये ऐसे डिजाइन की गई है. और सेकेंडरी, क्यों एक साथ मिलके काम करना जरूरी है? एक साथ मिलके काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोगों ने वर्क फ्लो पे समझा था. यहाँ पर कहाँ गया? हाँ, क्योंकि हम लोगों ने वर्क फ्लो पे समझा था यहाँ पर कि जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, जूम इन कैसे हो गया? ओके, सो देखो, जैसे 2 टीम काम कर रही है यहाँ पर. पहली टीम काम कर रही है ABCDE फीचर पे और दूसरी टीम काम कर रही है FGHIJ फीचर पे. तो हम क्या करते हैं अजाइल में, ये टीम 1 जनवरी को स्टार्ट कर रही है तो ये टीम भी 1 जनवरी को स्टार्ट करेगी. ये टीम अगर 20th फेब को डिलीवर कर रही है तो ये टीम भी 20th फेब को डिलीवर करेगी, करेक्ट. सो बेसिकली क्या होता है, एक साथ स्टार्ट करना होता है और एक साथ खत्म करना होता है काम, ताकि दोनों का आउटपुट हम लोग सर्वर पे डिप्लॉय कर सके, कस्टमर को दे सके, करेक्ट, दोनों का आउटपुट. तो बेसिक आइडिया इज दैट कि जब हम स्क्रम टीम क्रिएट करते हैं, उसका आर्किटेक्चर ही अजाइल में ऐसा बनाया गया है कि दूसरी टीम्स के साथ कोप अप करने में आपको इजी पड़े. समझ रहे हो? आर वी क्लियर नाउ? यस सर. कूल. अब देखो, ऐसे ही तुम
बेसिकली अगर 10 प्रोडक्ट बैकलॉग है तो 10 टीम बनेगी, करेक्ट? बेसिकली तो 10 पर्टिकुलर टीम ऑनबोर्ड होगी और 10 टीम का स्ट्रक्चर, 10 टीम का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। एक कोर टीम होगी, स्क्रम टीम के हर एक टीम की कोर टीम होगी। कोर टीम में कौन कौन आएगा? स्क्रम मास्टर। There will be one scrum master in the core team. Every scrum team will have one core team and one shared team. Okay, basically one core, every scrum team will have one core team and shared team will be shared between multiple scrum teams. ये क्या कैसे होता है मैं बताता हूँ, ठीक है? So core team पहले देख लेते हैं। core team में कौन कौन होगा? There will be scrum master, there will be testing team and there will be whole development team. हर scrum team का एक core team होगा। In that particular core team there will be whole testing team, whole development team, and there will be one scrum master. Now who is this scrum master? Development team, you know, development lead and their colleagues, testing lead and their colleagues. Testing team will be head by testing lead, development team will be head by development lead. This both testing team and development team will be managed by scrum master. Who is scrum master? Scrum master is like a madari, is like a manager first of all. So वो क्या करता है? तुम लोगों को मैनेज करता है। If he understand that कि तुम टाइम पे काम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो या फिर you are not working at accuracy or something like that, and if you need something in order to do your work, for an example, ये टेस्ट इंजीनियर को क्या चाहिए? डेटाबेस का एक्सेस चाहिए। So he will not directly go to database analyst and database administrator and ask him for the access. He will route to the scrum master. Basically scrum master is basically responsible to facilitate the whole core team. पूरी कोर टीम को फैसिलिटेट करने का काम जो होता है वो स्क्रम मास्टर का होता है। अगर तुमको किसी भी चीज का हेल्प चाहिए आउट ऑफ द टीम, देन you have to reach to scrum master. Scrum master will arrange a call or arrange that particular thing for you. ठीक है? तो वो मैनेजर जैसा होता है। जैसे आप होटल जाते हो, कोई भी आप चेक इन करते हो, आप रुक रहे हो एक दिन फॉर एन एग्जांपल, और रात को अगर आपको कुछ काम पड़ता है, कुछ इमरजेंसी होती है, तो यू बेसिकली कॉल मैनेजर एंड ऑल, राइट? तो मैनेजर यूज्ड टू फैसिलिटेट यू एट दैट टाइम। सेम वर्क स्क्रम मास्टर विल डू फॉर द होल टीम, कोर टीम। ओके, तो टेस्टिंग टीम या डेवलपमेंट टीम को अगर किसी भी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प चाहिए रहती है, स्क्रम मास्टर इज देयर। कोई आउटसोर्सिंग की जरूरत होती है, फॉर एन एग्जांपल बिजनेस एनालिस्ट से कुछ डाउट है, स्क्रम मास्टर विल हेल्प यू कनेक्टिंग दोस पीपल, शेयर टीम पीपल टू यू basically. Now who is this share team? Share team will have those people whom you can't utilize all the. एक बार और रिपीट करूंगा मैं ये वर्ड, ये सेंटेंस। शेयर्ड टीम contains those people whom you can't utilize all the time. अब देखो, इस पर्टिकुलर इंजीनियर को अगर डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, he will connect with network base admin and database admin. Basically he will give the access, database admin will give the access. Now he is free, network base admin is free, test engineer will again start working on his own piece, start testing, but he is free, right? तो बेसिकली ये इसको तुम क्या नहीं कर सकते, इसको तुम थ्रू आउट यूटिलाइज नहीं कर सकते। तुमको ये इसका काम हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में एक बार पड़ेगा, करेक्ट? बाकी टाइम ये खाली रहेगा, isn't it? And same thing goes with our business analyst also. Business analyst, तुमको कोई रिक्वायरमेंट में क्लैरिटी चाहिए, you will go to business analyst, you will ask. Once you are done with clarification, business analyst is free, he doesn't have any kind of work, isn't it? Yes, no, anything guys? So the basic idea is that these are those people you can't utilize throughout your day. So हम लोगों ने आइडिया क्या लगाया, ये जो अजाइल में स्क्रम टीम बनाया है जिसने, उसने आइडिया क्या लगाया, इफ दे आर अंडर यूटिलाइज्ड, लेट्स शेयर देम टू मल्टीपल टीम्स। जो दूसरे प्रोडक्ट बैकलॉग की दूसरी स्क्रम टीम होगी ना, उसकी भी शेयर टीम यही रहेगी। तीसरे प्रोडक्ट बैकलॉग की स्क्रम टीम भी जो होगी ना, उसकी भी शेयर टीम यही रहेगी। One share team will be shared with multiple scrum teams, and every scrum team will have its own core team. That's why it is called as share team and core team. Share team इसलिए बोला जाता है because it is being shared by multiple people, multiple scrum teams. And core team इसलिए बोला जाता है, why? Because it is static, it doesn't change. Every team will have one core team for sure, it will not be shared. समझ गए? Everyone clear? स्क्रम टीम का स्ट्रक्चर? Yes, sir.
कूल। अब देखो यहाँ पर एक और चीज है, देर इज वन मोर पर्सन कॉल्ड प्रोडक्ट ओनर। देखो प्रोडक्ट ओनर कौन होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली यू आर वर्किंग इन अमेरिका, ठीक है, यू बिलोंग्स टू बैंगलोर, you are working in America, you got a good amount of salary there, you got a good amount of money. So what you thought, let's build a building in Bangalore, and we can start a PG there. You have a business idea and you want to construct a building in Bangalore. Now as you stay in America, you can't monitor the work in Bangalore, correct? अब देखो यार, कभी कोई घर बनाता है तो हम थोड़े थोड़े टाइम पे जाके देखते हैं ना कि काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, करेक्ट? वी यूज्ड टू डू दैट, राइट? Yes, sir. So basically, you can't monitor your work while staying in America. So what you will do, you will appoint a person. We will appoint a person from Bangalore to stay at your construction site or visit your construction site after shorter duration, so that that particular building is actually being constructed according to your requirement and at good quality. Correct? तुम ये करोगे? Yes, तुम sir. क्या करोगे? इंडिया में किसी बंदे को बोलोगे भाई मेरी वहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है, तुम क्या करो, तुम वो बिल्डिंग को मॉनिटर करो कि सही से मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रही है कि नहीं बन रही है और क्वालिटी उसकी अच्छी है कि नहीं, उसके बदले में आपको पे करूंगा, करेक्ट? या तो तुम्हारा कोई रिश्तेदार होगा तो उसको बोलोगे। तो सेम थिंग गोज विद प्रोडक्ट ओनर। एज अ आईटी कंपनी व्हाट वी वांट, हमारे साथ थ्रू आउट डेवलपमेंट जब तक चल रहा है तब तक हमारे साथ कौन बैठे रहे? हमारे साथ बैठे रहे हमारा कस्टमर, ताकि एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमको लगे कि ये सही है कि गलत है, या कोई भी क्लैरिफिकेशन हो तो हम डायरेक्टली उससे जाके पूछे और वो बता दे। जैसे कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बोलेगा ना, आर्किटेक्ट बोलेगा, अगर उसको कहीं भी कोई भी डाउट आएगा डिजाइन में, या फिर कहीं भी कोई डिजाइन क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल कौन सा यूज करना है, कोई भी क्वालिटी पर्पस से डिजाइन कंफ्यूजन आएगा, व्हाट ही विल डू, ही विल गो टू द योर ओनर एंड ही लास्ट कि तुमको ये वाला मटेरियल लगाना है कि ये वाला मटेरियल लगाना है, ही गिव द क्लियरिटी। बट हैविंग सेड दैट, यू स्टे इन अमेरिका, ठीक है, you can't directly interact with that particular person at your day time, because वहां पर रात होगी यहाँ पर दिन होगा, बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है। तो बेसिक आइडिया क्या है, तुम एक पर्सन अपॉइंट कर दो, उसको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी बता दो, नाउ ही विल हैंडल, करेक्ट? सो सेम गोज विद IT companies. When we want our clients to stay with us and clarify each and every of our doubt, they can't give us that amount of time, क्योंकि उनका बिजनेस है यार, like MNCs होती हैं वो भी खुद में ही। So basically they can't stay with us, they can't sit with us and tell what exactly they want again and again, right? They have their own work. So what they will do, they will appoint someone called as product owner to monitor the work, ठीक है? प्रोडक्ट ओनर कौन होता है? इट एक्ट्स एज अ कस्टमर। देखो ये एक्ट्स लिखा हुआ है, इट इज नॉट कस्टमर, इट एक्ट्स एज अ कस्टमर, ठीक है? ये एक ऐसा पोजीशन होल्डर होता है जो कस्टमर की तरह एक्ट करता है, वो कस्टमर की बिहेवियर को समझता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझता है और समझता है कि एग्जैक्टली कस्टमर को क्या चाहिए कब चाहिए, ठीक है? देखो यहाँ पर इसलिए ना मैंने बोला कि ये वाली प्रोडक्ट बैकलॉग की ब्रोक डाउन वाली मीटिंग में देयर विल बी वन मोर पर्सन कॉल्ड प्रोडक्ट ओनर। In this particular meeting only he will interact with the customer, or he will connect separately after the call, he will interact with the customer and try to understand कि उसको exactly क्या चाहिए। जब ये prioritization भी होता रहेगा ना, customer will say create home loan first. Why? Because customer have business mindset. They will say if my end user is applying for loan, that to home loan, he will apply for at least 30 to 40 lakhs. I will get good amount of interest out of that amount, right? So they will think of business perspective, they will ask you to develop home loan first. When your prioritization, according to your prioritization, they'll say first take loans, under that loans first take home loans, because I will have a lot of profit out of this particular feature. What as a IT company guy you will do, until and unless we don't create core banking feature like create account and approve account, the person will not be able to apply for loan. That's why this particular thing will we have to develop first. So बेसिकली यहाँ पर ये पूरी कन्वर्सेशन होगी और तुम्हारा कस्टमर इंटरेक्ट करेगा, यहीं पर प्रोडक्ट ओनर भी होगा, he will try to understand what exactly customer need, how fast he needs and what should be the quality of the software. He will understand the customer,
then he will act as a customer. So product owner will be in the shared team. He can also be a part of core team. Any person from here can transfer to the core team, but any person from the core team cannot be transferred to shared team. It's a rule. Okay. So product owner के बारे में बात कर रहे थे. Let's consider that only right now. So product owner, who the person who is appointed by the customer, will act as a customer. Now he can be from the customer side, customer company side only, or someone who is internal. ठीक है, हमारी कंपनी से भी हो सकता है वो बंदा, और सामने वाली की कंपनी से भी हो सकता है, कस्टमर की कंपनी से भी हो सकता है वो बंदा. ठीक है. So basically, if from anyone's side, if he's playing that particular role, the most important thing is that he has to understand the customer requirement, he has to understand the customer behavior, he has to understand the customer business and need of that particular business, so that he can take up the call, what customer will take when he will stay with us. Basically, अगर कस्टमर हमारे साथ होता तो वही कॉल जो कस्टमर लेता, वो कॉल कौन ले सके, प्रोडक्ट ओनर ले सके हमारे लिए, क्योंकि कस्टमर कांट स्टे विद अस थ्रू आउट. So basically, this is the product owner. This is the job of product owner, to act as a customer, to basically clarify our doubts regarding to our product and requirement, and also product owner sets the acceptance criteria. What is acceptance criteria? We already discussed it, right? What is acceptance criteria? This is the criteria the software testing team and development team needs to meet if you have to develop and deliver the software to the customer. If you have developed and you are not meeting the acceptance criteria, you can't deliver the product. Are we clear, guys? Yes, sir. Yes, sir. Everyone, yes, was that a yes or no, sir? First one. Yes, sir. Yes, sir. ओके, कूल. तो देखो ये होता है. ठीक है, अब देखो तुमने क्या किया हाई लेवल पे. अगर देखो तुमने क्या किया है अभी तक प्रोजेक्ट पे, हमारे पास रिक्वायरमेंट आई थी, हमने क्या किया, सबसे पहले ब्रेक डाउन कर लिया रिक्वायरमेंट का प्रोजेक्ट बैकलॉग में. प्रोडक्ट बैकलॉग को प्रायोरिटाइज भी कर दिया कि ठीक है, कोर बैंकिंग शुड बी डेवलप्ड फर्स्ट. अंडर दैट कोर बैंकिंग, क्रिएट अकाउंट, अप्रूव अकाउंट एंड लॉग इन एंड update KYC, something like that, change password, remember password. This is the order of our development. Now we have our work ready, we have our team ready, correct? We have our team ready. Now work needs to start. Before work gets started, now you know this is Scrum team 1. You name this team anything, right? In my current project, my Scrum team name is Kepler, so they can name it anything. Team का नाम कुछ भी हो सकता है, team 1, team 2, team 3, Kepler, Pegasus, Jaguar, anything. So currently in my project we are naming it Kepler. ठीक है. So basically, let's name this particular team as Kepler. For an example, this is your team. Assume that you are a team member of this particular core team. So you are Kepler team member and you have been tagged with this particular product pack. ठीक है. अब तुमको काम स्टार्ट करना है. Before you start your work, there is one meeting which needs to happen. This is called as BA walkthrough meeting, business analyst walkthrough meeting. What does that particular meeting do? In that meeting, you all will be there, whole core team will be there, and business analyst will be there. Scrum master होगा, पूरा development team होगा, testing team रहेगा और business analyst रहेगा. Business analyst will give you the walkthrough of the feature which you likely to develop in your first sprint. अब मैंने तुमको अजाइल पे बताया था, अजाइल पे स्प्रिंट्स पे काम होता है. यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ये स्प्रिंट पे काम होता है, ये ड्यूरेशन होती है स्प्रिंट की. स्प्रिंट खत्म होती है तो हो सकता है तुम्हारे प्रोजेक्ट में ये ट्रेंड हो कि एक स्प्रिंट के बाद ही डिलीवरी कर रहे हो या फिर मल्टीपल स्प्रिंट के बाद डिलीवरी कर रहे हो. तो बेसिक आइडिया क्या होता है, तुम फॉर एन एग्जांपल यू आर वर्किंग ऑन योर पर्टिकुलर स्प्रिंट, यू विल टेक अ स्कोप ऑफ दैट स्प्रिंट ना, कि ये स्प्रिंट में हम लोग ये 4 फीचर करेंगे, करेक्ट? यू विल टेक अ स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर स्प्रिंट. सो वो सारे फीचर जो तुम स्प्रिंट पे करने वाले हो, those features which you are likely to take up in this particular sprint, in your next sprint, upcoming sprint, those features ka business analyst will give you a walkthrough, how that feature work, what that feature is, what customer wants in there. समझ रहे हो? Everyone is clear?
बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो. Yes, no, anything guys? Yes, sir. Everyone is following up ना guys? Are you guys Yes, sir. following up? ठीक है. तो basic idea is that first meeting is business analyst will give you a walkthrough. Okay, business analyst will give you a walkthrough of the features which you are likely to take up in your upcoming sprint. तो ये 4-5 फीचर्स का तुम लोगों को बिजनेस एनालिस्ट ने वॉक थ्रू दिया. उसने बताया क्रिएट अकाउंट क्या होता है, कैसा होना चाहिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट क्या है, अप्रूव अकाउंट का फंक्शनैलिटी, लॉगिन का, रिमेंबर पासवर्ड का, चेंज पासवर्ड का, उसने वॉक थ्रू दे दिया. नाउ यू विल स्टार्ट योर स्प्रिंट. स्प्रिंट स्टार्ट करोगे, ये काम स्टार्ट करोगे तुम. सो वेरी फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंट वी हैव वन मोर मीटिंग. मीटिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मीटिंग दे यूज्ड टू आस्क इन इंटरव्यू. First meeting was BA walkthrough meeting. What is that meeting? This is the meeting wherein business analyst will give you the walkthrough of the features or user story. User story is a better term to use. User story which you are likely to take up in your upcoming sprint. Got it, everyone? Cool. Yes, sir. second meeting is sprint planning meeting. देखो sprint planning meeting बहुत important meeting होती है. हर sprint के first day you do sprint planning meeting. Every sprint first day is being dedicated to do this sprint planning meeting. Got it? So what we do in sprint planning meeting? In sprint planning meeting, we used to pull our work from product backlog. जो product backlog था हमारे पास यहाँ पर, इस प्रोडक्ट बैकलॉग में से तुम क्या केपलर क्या करेगी, वर्क पुल करेगी. ठीक है. और फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में कौन कौन रहेगा? स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में देयर विल बी होल कोर टीम एंड देयर विल बी प्रोडक्ट ओनर. there will be also there is a chance there will be business analyst also, but it's like optional thing. They can join, they might not join, but product owner and whole core team are mandatory to have in sprint planning meeting. तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में तुम क्या करते हो, फीचर्स पुल करते हो ताकि तुम स्प्रिंट का स्कोप डिसाइड कर सको कि उस स्प्रिंट में कितना काम तुम करने वाले हो. नाउ आई हैव टोल्ड यू कि जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो क्या करता है. प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, बेसिकली कस्टमर के जैसे एक्ट करता है. तो ही विल ट्राई टू आस्क यू टू पुल एट मोस्ट वर्क एट यू कैन डू. तुम्हारी वेलोसिटी के हिसाब से, तुम्हारे एवरेज फीचर डेवलपमेंट के हिसाब से. फॉर एन एग्जांपल तुम एक पर्टिकुलर स्प्रिंट पे 4 फीचर 5 फीचर डेवलप कर लेते हो, तो ही विल आस्क यू टू पुश फॉर 6. ठीक है. सो बेसिक आइडिया इज दैट यहाँ पर स्प्रिंट का स्कोप डिसाइड होता है. मेजर पार्ट क्या होता है यहाँ पर, आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, व्हाट विल we create as a output. The output is basically the scope of the sprint. What is the amount of work you need to complete in this particular sprint? So that is being done in sprint planning meeting. A sprint planning meeting with basically scrum master will be there along with whole development team and testing team along with your product owner. Before we start our sprint planning meeting, we do retrospect. Basically we do like refer to retrospect document. अभी तुमको पता नहीं है retrospect क्या होता है, तो don't take it right away, but मैं तुमको बताऊंगा at the end of this lecture कि retrospect क्या होता है. ठीक है. Second thing, basically ये सारे लोग इकट्ठा होते हैं and they will pull their stories from where? From product backlog. So product owner बोलेगा नहीं 8 फीचर कर लो, 9 फीचर कर लो, and you guys will tell them कि it is not possible, क्योंकि sprint का somewhere duration कितना होता है, 2 to 3 weeks. That is the average duration of a particular sprint which we used to follow in our industry. It is not mandatory to have 2 to 3 weeks. कई लोग 4 weeks भी रखते हैं, कई लोग 2 weeks भी रखते हैं. So it totally depends upon your project कि क्या project में हो रहा है. And basic idea is that you will be taking up your work according to that time duration only. अब देखो यार 4 ही दिन है तुम्हारे पास काम करने के लिए, और तुम बोलोगे 4 दिन में मैं पूरा घर बना लूंगा, तो तुम बना तो पाओगे नहीं. तो यू नीड टू टेक अप द कॉल टेकिंग द टाइम सीरियसली. ठीक है. तो यू विल से कि ये 3 weeks का स्प्रिंट है, आई विल बी एबल टू कंप्लीट ओनली 4 फीचर्स. दे विल से कंप्लीट 6 फीचर. So they means basically your product owner will say complete 8 features, something like that. So then Scrum Master will came to an action, and Scrum Master will be responsible to negotiate between you and the product owner. You matlab basically your whole testing team and development team
whole core team and product owner, Scrum Master will do the negotiation, and basically you will end up having somewhere around 6 features basically in your board for that particular sprint. ठीक है? तो फॉर एन एग्जाम्पल तुमने ये सारे फीचर अपने क्या कर लिए, स्प्रिंट के स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सेप्ट कर लिए, ये सारे यूजर स्टोरी और स्टोरी कार्ड तुमने एक्सेप्ट कर लिए. ठीक है? सो इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में तुमको क्रिएट अकाउंट, अप्रूव अकाउंट, लॉग इन, लॉग आउट, चेंज पासवर्ड, रिमेंबर पासवर्ड एंड अमाउंट बैलेंस ये बनाना है. ठीक है? नाउ इंडिविजुअली स्टोरी कार्ड विल बी टैग्ड टू वन डेवलपर एंड वन टेस्ट इंजीनियर. This particular story card, for an example, create account will be tagged to one developer and one test engineer. Let's do this activity right away. Let's say Anjali is the first one, so Anjali is being tagged as a developer to create account, and Apurva is the second name here, so Apurva is being tagged as a tester to this particular create account. Now once they are done tagging with this particular create account and approve account, create account as a developer and as a tester, so basically what they will do, they will be asked to story point it, they will be asked to estimate the time they will need in order to completely develop this feature. They will ask it to the developer, and they will ask the same question to the tester: what is the amount of time you will be needing in order to completely test this create account feature. So both will first of all think in their mind that what all tasks we need to do in order to completely test this and develop this particular feature. For an example, what was the first name? Anjali was there, right? The developer. So Anjali will derive task in task. What kind of task he needs to do in order to completely develop this feature? First is requirement understanding. Second is basically designing, high level design, low level design. Third is basically doing the coding. Fourth is doing the white box testing. Correct? These are the 4-5 tasks, and fifth is basically before white box testing you need to connect with the database and do the connectivity stuff. Okay, so these are the 5 tasks. Who needs to do? Anjali needs to do as a developer to completely develop this create account. So what Anjali will do, Anjali will try to story point, Anjali will try to estimate each and every task. Okay, first task I'll be able to complete in 1 hour, second task 2 hours, third task 3 hours, fourth task 2 hours, and fifth task also 2 hours. So collectively what is the amount of time in order to completely develop this create account? What is the amount of time Anjali needs as a developer? 10 hours. So she will give the development story point, which will be 10 hours. Story point is nothing but the estimate, the amount of time needed to complete that particular story. Okay, so if you are talking about the development standpoint, it will be development story point. If you're talking about this testing standpoint, it will be testing story point. And if you want to collectively understand what is the amount of the work we are, what is the amount of the time we have to invest in to completely develop and test this particular user story, it will be combine of development plus testing, means nothing but the 18 hours. समझ रहे हो? तो जैसे अंजलि ने एज अ डेवलपर टास्क डिराइव किया और स्टोरी पॉइंट दिए, वैसे ही टेस्टिंग टीम से भी, जैसे अपूर्वा थी, अपूर्वा को जब पूछा जाएगा कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम यू विल नीड इन ऑर्डर टू कंप्लीटली टेस्ट दिस पर्टिकुलर क्रिएट अकाउंट, अपूर्वा विल आल्सो डिराइव टास्क. क्या टास्क होंगे वो? सबसे पहले अपूर्वा नीड्स टू डू रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, then deriving the scenario, then creating the test case. Creation of test case involves a lot of things. Na? You will document the test case, and then after that you have to get it reviewed, then fix the review comment, get the approval, then execution. These are the 4 tasks who needs to do? Apurva needs to do in order to completely test this particular create account. Yes. Then what Apurva will do? Estimate each task. For an example, first task will take 2 hours, second task will take 1 hour, second task will take 3 hours, and third task will take 2 hours, and fourth task will take also 2 hours. So basic idea is that collectively 8 hours of time Apurva will need in order to completely test this create account. So they will do what? They will ask for your estimate. They will then add these estimate and create a story point for that particular user story or story card. This is the estimation process which we used to do in the sprint planning meeting. Are we good, guys?
Did we understood it properly? This is all we need to do in sprint planning. First, we need to pull the work from the product backlog, and we have to discuss what is the amount of work we can take in this particular sprint with our product owner, and then individual stories, individual story card or user story, nothing but the feature will be tagged to individual developer and tester. They need to estimate what is the amount of time they will need in order to completely develop and test this particular feature, and eventually they will give a story point, total time taken, or user story point, combination of development pointers and story point and testing story point. They will create a combined story point. Got it everyone? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई क्वेश्चन दिक्कत, किसी को समझने में कोई अभी पूछ सकते हो, कोई भी डाउट कहीं पर? Yes, no, anything? No doubts? And in Agile, the terms are very different. What we have studied Correct. earlier. करेक्ट. देखो अजाइल ऐसा था, पता नहीं इसको इतना लाइक, क्योंकि अगर तुम देखो ना तो इसको रिक्वायरमेंट भी बोला जा सकता है, but they want to like outstand. This is not something which it is being developed in India now. We have a habit of frequently calling it as a requirement. Bahar, people don't used to call it as a requirement. They frequently used to call it as story point only nowadays. So हम लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, वहाँ के लोगों को इतना नहीं लगता. तो बेसिक आइडिया इज दैट कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना, एक दो बार रीड करोगे ना, यू विल आल्सो गेट यूज्ड टू, क्योंकि इवेंचुअली तुम लोग यही टर्म यूज करने वाले हो अपने इंडस्ट्री में, क्योंकि अभी जितना भी काम चल रहा है सब अजाइल पे चल रहा है ना. तो दे विल नॉट कॉल इट एज अ फीचर रिक्वायरमेंट, दे विल कॉल इट एज अ स्टोरी पॉइंट और यूजर स्टोरी, सॉरी स्टोरी कार्ड और यूजर स्टोरी. सो यू विल गेट हैबिचुअल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. बट उससे पहले तुमको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, तो उसके लिए तुमको ये सारी टर्म्स को प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो पढ़ो एक दो बार हो जाएगा. Even this lecture which we are going through right now, try to listen to it this at least 2 to 3 times, because there is a lot more content in this particular lecture compared to other lectures we have gone through. हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ते थे. अगर अजाइल को एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे ना तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सेकेंडरी, तुम वो लिंक नहीं कर पाओगे सारे टॉपिक को एक साथ. अभी मैं तुमको प्रोसेस के हिसाब से ही बता दे रहा हूँ. तो ये प्रोसेस के हिसाब से याद करोगे ना तो टॉपिक्स इंडिविजुअल भी याद रहेंगे, और अगर तुमको कोई कलेक्टिवली पूछता है तो कलेक्टिवली भी बता पाओ. ठीक है? Yes, sir. कूल. चलो ठीक है. दिस इज सेकेंड स्टेप और वेरी सेकेंड मीटिंग विच वी हैव वेंट थ्रू, राइट? हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बेसिकली अभी तक सबसे पहले एपिक ली. एपिक लेने के बाद हम लोगों ने एपिक को ब्रेक डाउन किया प्रोडक्ट बैकलॉग में. Product backlog में we have prioritized what all feature needs to be developed, or user story needs to be developed, what all module needs to be taken first. Then we have created Scrum team. Under Scrum team we have core team and we have share team. Core team will be static for every Scrum team. Share team will be shared to multiple team, right? And then after that, basically we have gone through our BA walkthrough meeting and then sprint planning meeting. BA walkthrough meeting is basically for giving us the walkthrough for the features which we are likely to take up in our upcoming sprint. What is sprint planning? Sprint planning meeting is a meeting which is done at the very first day of sprint. Here we decide the scope of sprint, and also we assign work to the respected owners of that particular stories. ठीक है? And we also estimate stories. Got it? Everyone clear? Crystal clear? पूरा process अभी तक? Yes. Yes, sir. अब देखो, now you will start usually अब तुमको वर्क असाइन हो गया, तुम्हारे पास रॉ मटेरियल है, तुम्हारे पास लेबर है, तुमने लेबर को असाइन कर दिया वर्क. व्हाट दे विल डू? दे विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन. सेम थिंग विल हैपन. यू विल स्टार्ट डेवलपिंग एंड टेस्टिंग इट पैरेलली. जो फीचर बाय फीचर हम लोगों ने लर्न किया था वर्कफ्लो पहले, वो वर्कफ्लो यहाँ पर एक्शन में आता है. Here you used to do this particular work. They will give feature by feature, one by one in different builds. You will conduct your all testing. You will write your test cases. You will do the execution. एक चीज ध्यान दिए, जब मैंने यहाँ पर बताया estimation का, testing estimation, we didn't estimated defects, correct?
व्हाई? बिकॉज वी नेवर एस्टिमेट डिफेक्ट्स. तुमने कोई बफर टाइम नहीं लिया कि डिफेक्ट आएगा तो डिफेक्ट लॉक करेंगे, रीटेस्टिंग में टाइम जाएगा. करेक्ट? कभी ये लाइक हम लोगों ने एस्टिमेट ही नहीं किया टेस्टिंग स्टैंड पॉइंट से, ना डेवलपमेंट पे एस्टिमेट किया गया ये कि डिफेक्ट्स आएगा तो डिफेक्ट फिक्स करने में टाइम लगेगा. वी डिडंट एस्टिमेट इट, राइट? नाउ why we didn't estimate it? Why? Because defect is an uncertain thing. You are not sure that defect will come. There might be chances it will not come, or there will be a lot more defect. So anyways it doesn't make a sense to estimate defect. Why? Because हो सकता है तुम्हारा estimate हो क्या सकता है, most of the time तुम्हारा estimation गलत होगा. That's why we don't estimate defects, neither by the development standpoint, neither by the testing standpoint. ठीक है? Cool. Coming up to yeah, this workflow. ये workflow होता है. अब ये day by day, like give me a second, I'll connect to the charger. Day by day they will start developing, you will start testing the feature, right? Feature by feature they will deliver it to you in different builds, and you will be testing those builds and raising the bugs. You will do burn your tasks. अगर तुमने टास्क बनाया है टेस्ट केस क्रिएशन का, एग्जीक्यूशन का, बेसिकली यू विल ट्राई टू कोप अप विद दैट टास्क एंड ट्राई टू फिनिश द टेस्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर, एंड यू विल कंप्लीट द स्कोप ऑफ द स्प्रिंट. अगर तुमने स्प्रिंट का स्कोप ये डिसाइड किया था, यू विल कंप्लीट दैट पर्टिकुलर स्कोप एंड यू विल work on this particular sprint, and at the end you will have, at the end of the sprint you will have all the 8 features which you have decided. 8 नहीं 7 features. ठीक है? अब देखो एक चीज और होती है, as an output of this sprint planning meeting we get something called as sprint backlog. What is a sprint backlog? Same to product backlog. That is a pending amount of work which we need to do in order to develop that particular product. Sprint backlog is a pending amount of work which you need to do in order to complete that particular sprint. ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर काम कंप्लीट होगा तभी स्प्रिंट कंप्लीट होगी. स्प्रिंट हैज अ सर्टेन ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन के बाद स्प्रिंट एंड हो जाती है. बट व्हाई वी कॉल इट अ स्प्रिंट बैकलॉग? बिकॉज इनिशियली वी हैव डिसाइडेड कि ये पूरा काम हमको एज पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्प्रिंट करना है. सो स्प्रिंट बैकलॉग इज अ डॉक्यूमेंट which will consist basically amount of work which we have decided in order to complete in that particular sprint duration. Are we clear? Yes, sir. Yes, sir. Cool. अब देखो, अब मैंने तुमको बहुत पहले जब वाटरफॉल पढ़ रहे थे, वाटरफॉल का एक पॉइंट था, इट डजंट मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल. करेक्ट था ना? कल ही पढ़ा था शायद, परसों पढ़ा था शायद. तो उस पे एक पॉइंट था, इट डजंट मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल वाटरफॉल में. और मैंने बोला था कि अजाइल में ये हम लोग ड्रॉबैक ओवरकम कर लेते हैं, जब अजाइल पढ़ेंगे तब बताऊंगा कैसे करते हैं. तो यहाँ पर एक और चीज होती है, डेली स्टैंड अप मीटिंग. वैसे तो बहुत सारी प्रोसेस है जिसके थ्रू अजाइल आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि आप आलस कर रहे हो काम करने के लिए, तो वो आपको रिस्पॉन्सिबल बनाता है और आपको काम करने की तरफ प्रोवोक करता है. यू कांट डू काम चोरी इन अजाइल. ओके, सो बेसिक आइडिया इज दैट there is something called as daily stand up or scrum meeting. Every day it used to happen. Every day morning, the first thing when you start your work, the first thing you do is daily stand up meeting. It's a 15 to 20 minutes meeting. ठीक है? ये मीटिंग में every individual including the scrum master, core team का every individual, core team का ना, whole testing team, development team and scrum master, every individual needs to give the update कि कल उन लोगों ने क्या किया था, आज वो लोग क्या करेंगे, कल क्या प्रॉब्लम फेस की थी, आज क्या प्रॉब्लम फेस करने के चांसेस हैं. What they will discuss in this daily stand-up meeting every day morning, every day through 15 to 20 minutes they will connect. First thing they will do in that particular day is to connect, and they will basically do what? They will try to discuss. Every individual will give the update. They will try to discuss what they have done yesterday, what they are planning to do today, and what is basically the blocker or impediment they have faced. blocker का या obstacle का alternative word होता है impediment. So they will update कि क्या impediment face किए थे वो yesterday और क्या वो लोग face करने के chances देख रहे हैं today.
ठीक है, दे विल गिव द अपडेट। नाउ अगर वो इम्पेडिमेंट जो ये फॉर एन एग्जांपल हाइपोथेटिकली ये टेस्ट इंजीनियर कल एक इम्पेडिमेंट फेस कर रहा था, ठीक है, और ही हैज टू कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर डेवलपर, ठीक है, या फिर ये इसलिए वेट कर रहा है, इसका काम इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि एक ब्लॉकर बग था और इस डेवलपर ने बिल्ड नहीं दिया अभी तक। अगर ये राइट अवे सॉल्व हो सकता है, अगर स्क्रम मास्टर इसको बोल सकता है कि अभी तुम फ्री हो, अभी इसको बिल्ड दे दो, या फिर अभी तुम जो कर रहे हो उसको छोड़ के इसको बिल्ड दे दो, तो ये इम्पेडिमेंट यहीं के यहीं सॉल्व हो जाएगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यहीं के यहीं सॉल्व हो गई, ये अनब्लॉक हो गया, ये मीटिंग के बाद ये बिल्ड दे देगा, ये अनब्लॉक हो जाएगा और आज का काम हो जाएगा। करेक्ट, ये पर्टिकुलर क्या होगा, इम्पेडिमेंट सॉल्व हो जाएगा। तो ये यहीं के यहीं सॉल्व भी कर सकता है, या फिर अगर ये बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इस इम्पेडिमेंट को सॉल्व करने में, फॉर एन एग्जांपल दिस टेस्ट इंजीनियर नीड्स डेटाबेस एक्सेस एंड ये इसके लिए ब्लॉकर है, इम्पेडिमेंट है, ऑब्स्टिकल है, ताकि ये इसके काम कंप्लीट करने में। So basic idea क्या है, what Scrum Master will do, if it can be resolved right away, he'll basically message network-based admin to give the access to this particular engineer, or else he will document it. For an example, ये network-based admin एक हफ्ते के लिए छुट्टी पे गए, this impediment can't be resolved right now. He will write down in a document. He'll create a document. Scrum Master will create a document of that all impediments which needs to be resolved in near future. ठीक है, अभी नहीं सॉल्व हो सकती है बट नियर फ्यूचर में उसको सॉल्व करना है, तो वो क्या करेगा, वो लिख लेगा। जैसे हम लोग करते हैं ना, हम लोग नोट्स बनाते हैं ताकि हम भूल ना जाए किसी चीज को, वैसे ही इम्पेडिमेंट्स के नोट्स बनाता है स्क्रम मास्टर ताकि वो मिस ना कर दे कुछ भी। उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, इम्पेडिमेंट बैकलॉग। इम्पेडिमेंट बैकलॉग वो उन सारे ऑब्स्टिकल की लिस्ट होती है जो नियर फ्यूचर में रिजॉल्व करना होता है। ठीक है, अब देखो मैं बोल रहा था पीपल रिस्पॉन्सिबल कैसे होते हैं। नाउ फॉर एन एग्जांपल, यू आर नॉट वर्किंग, you haven't worked yesterday, every day you have to give the update, so today you will make bahana and all in the stand up, right, in daily stand up or scrum meeting, basically you will say something कि हाँ यार ऐसा हो गया था वैसा हो गया था। now again tomorrow also you didn't work, so day after tomorrow you have to give the update, right, कि कल क्या किया था। यू अगेन यू विल से कि नहीं नहीं ये हो गया था वो हो गया था, बट ये डेली बेसिस पे नहीं कर सकते हो तुम। करेक्ट, रोज रोज अगर तुम 10 लोगों के सामने एक ही चीज बोलते हो तो सामने वाला समझ जाता है कि तुम काम चोरी कर रहे हो। तो दिस इज द प्रोसेस दे आर फॉलोइंग इन ऑर्डर टू मेक पीपल रिस्पॉन्सिबल। ये तुम डे टू डे लाइफ में भी, अगर तुम्हारी छोटी सी शॉप है ना, तुम डेली स्टैंड अप वहां पे अप्लाई करके देखो, तुम देखोगे कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर उनको रोज बताना पड़ेगा ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो इवेंचुअली दे विल स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, राइट। सो दिस इज हाउ दे ओवरकम दिस पर्टिकुलर थिंग, राइट। They make people responsible. First, they tagged individual story to an individual user, individual tester and developer, so that if that particular piece has a defect, that we can catch that individual developer and individual tester. It's not like whole team is testing on this particular piece. It's like one particular engineer is responsible, so we can individually catch the person. Secondly, we can make people responsible by asking them what you have done yesterday, what you are doing today. Okay, समझ गए सब। देखो एक और प्रोसेस, ये तुम लोगों को ना शर्मिंदा करने के लिए प्रोसेस है, ताकि तुम शर्मिंदा होके काम करना चालू करो। देखो ये होता है स्टोरी बोर्ड और व्हाइट बोर्ड। ये कहाँ, ऐसी जगह, ये बेसिकली ऑफलाइन भी हो सकता है, बेसिकली एक फिजिकल बोर्ड भी हो सकता है, और ये ऐसी जगह लटकाया जाता है जहां पर से सबकी इसकी नजर जाए, इस पे नजर जाए। ठीक है, ये ऐसी जगह लटकाया जाता है जहां से सब कोई इसको देख सके, और यहाँ पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे ऊपर जितने भी स्टोरी कार्ड असाइन होंगे वो सारे के नंबर्स होंगे या नाम होंगे। बेसिकली उसमें लिखा होगा पेंडिंग स्टोरी कार्ड, इन प्रोग्रेस स्टोरी कार्ड एंड कंप्लीट स्टोरी कार्ड। ये जीरा में भी होता है, ये वर्चुअली भी हो जाता है। ठीक है, जीरा में यू हैव द फैसिलिटी टू डू दैट। सो यहाँ पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, अगर तुम्हारा बहुत सारा पेंडिंग वर्क है यू कैन सी दैट हियर, एंड अदर आल्सो कैन सी दैट हियर, राइट। यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ पेंडिंग वर्क, इन प्रोग्रेस वर्क भी दिखेगा, कंप्लीटेड वर्क भी दिखेगा। तो इफ यू आर लैगिंग बिहाइंड, you can look at that board, and everyone can look at that board, and you have to do your work on time because of this board also. Got it? Yes. Cool. This is one more thing which is used to track you whether you are working on time or not. देखो तुमने एस्टिमेशन दे दिया, तुमने बोल दिया कि भाई ठीक है 3 दिन में कंप्लीट कर देंगे ये पर्टिकुलर फीचर का टेस्ट,
तुमने बोल दिया। अब उस टाइम तुम सोचोगे कि हाँ यार बोल दिया, कौन सा हमारा ये मेरे को पूछेगा, 3 दिन के बाद ही तो पूछेगा आके कि कंप्लीट क्यों नहीं किया वर्क। 3 दिन तक तो मैं बैठ सकता हूँ आराम से, बोल दूंगा कुछ भी। होता है ना ऐसा, people used to think like that, right? If I've given the 3 days estimation, third day only he'll get to know, na, I'm not doing anything. What he'll do, he'll say that extend one more day, I'll complete that work in 1 day only at 4th day. So basic idea is that this particular burn down chart is a graph which is used to track your work. One axis they will write the story cards, another axis they will have the time in terms of days, in terms of hours, depending upon your level of estimation. देखो कई projects में you give the estimation in terms of days. Mostly you will give the estimation in terms of days only. So this way, this duration, this basically represent the days. ठीक है? तो यहाँ पर तुम्हारा ये एक एक्चुअल ग्राफ होगा और एक एस्टिमेटेड ग्राफ होगा। एस्टिमेटेड ग्राफ होना इस एस्टिमेशन से बना लेगा तुरंत बर्न डाउन चार्ट का। जो तुमने स्प्रिंट प्लानिंग में एस्टिमेशन दी है ना, इस एस्टिमेशन से वो एस्टिमेटेड ग्राफ बना लेगा तुरंत स्क्रम मास्टर, राइट? देन एक्चुअल ग्राफ विल गेट क्रिएटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लुकिंग एट योर वर्क। डेली स्टैंड अप में वो तुम्हारा अपडेट लेगा कि कितना काम कंप्लीट हुआ है, he'll create a graph out of it. Scrum master will do that, right? And if he sees you're lagging way more behind than your estimated time, he'll start pushing you in between only. 2 दिन हो गया तेरा, 3 दिन में काम कंप्लीट होना है, अभी तक तूने किया। While looking at this graph, अगर तुम इस स्पीड से काम करोगे, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन तक तुम्हारा काम नहीं खत्म होगा। You have to do it faster. Try to complete it on time. This is the term they used to use in order to motivate you. So Scrum Master will create this kind of graph. We call it this graph as a burn down chart, wherein they track your actual work against the estimated work, against the estimation you have given in your sprint planning meeting, and basically where in one axis will have the feature and another axis will have time. Got it, everyone? Yes, sir. अब लास्ट टॉपिक तुम लोगों को छोड़ दूंगा। आई नो लाइक 5 मिनट्स ओवर है हम लोग, बट दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अजाइल। एक मीटिंग है अजाइल में, वी कॉल इट एज रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग। व्हाट वी कॉल इट एज रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग। देखो, once you are done with the development, you move the software to the customer, correct? कस्टमर को सॉफ्टवेयर डिलीवर कर देते हो, स्प्रिंट खत्म होती है, डिलीवरी हो जाती है, करेक्ट? So basic idea is that once after the end of every sprint or every delivery, once after the end of every sprint or every delivery, you do something called as retrospect meeting. What is retrospect meeting? Retrospect होता क्या है? जैसे हम लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना, अपने अंदर झांक के देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वैसे ही रेट्रोस्पेक्ट होता है। इसमें हम लोग अपने काम को देखते हैं और देख के पता करते हैं कि क्या हमने सही किया इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में और क्या हमने गलत किया इस पर्टिकुलर स्प्रिंट में। फॉर एन एग्जांपल, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को अगर अभी तुम जाओगे ना तो यू विल सी कि तुम जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड जनरेट करते हो ना डेटाबेस पे, फॉर एन एग्जांपल फेसबुक पे लॉगिन करना है, तुम फेसबुक टेस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए यूजर आईडी पासवर्ड फेसबुक पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए। ये यूजुअली डेटाबेस होता है। फॉर एन एग्जांपल, क्रिएट अकाउंट फीचर बना नहीं है अभी तक, लॉगिन बन गया, तो तुमको लॉगिन करके देखना है करेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड से। उसके लिए तुमको क्या चाहिए रहेगा? टेस्ट डेटा चाहिए रहेगा। उसके लिए तुमको यूजर आईडी, करेक्ट यूजर आईडी एंड पासवर्ड चाहिए रहेगा। ये ना डेटाबेस टीम क्रिएट करके देती है तुमको। इन बिग प्रोजेक्ट्स यू गेट अ सेपरेट डेटाबेस टीम। तुमको रिक्वेस्ट भेजनी होती है कि मेरे को ये टाइप का यूजर चाहिए, डेटाबेस टीम विल गिव यू द यूजर आफ्टर सम ड्यूरेशन। 5-6 दिन में वो तुमको यूजर दे देती है, ठीक है? यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे देती है, जो वैलिड यूजर आईडी एंड पासवर्ड होता है, डेटाबेस में रजिस्टर्ड होता है। नाउ assuming this, in this particular sprint, तुमने डेटाबेस का रिक्वेस्ट तुमने थर्ड साइकिल पे दिया, थर्ड साइकिल पे दिया, थर्ड टेस्ट साइकिल पे दिया, तो तुम्हारा डेटाबेस फोर्थ टेस्ट साइकिल पे आया, जिसकी वजह से तुम्हारा पूरा टेस्टिंग का काम एट द एंड ऑफ टेस्ट साइकिल पे आ गया, ठीक है? लास्ट टेस्ट साइकिल पे तुमको पूरा एक्सटेंड करके टेस्टिंग कंप्लीट करना पड़ा। सो दिस विल बी योर बेसिकली अ ड्रॉबैक ना। तुमको ये जो टेस्ट डेटा रिक्वेस्ट था वो बिगिनिंग में ही भेज देना था, ताकि वो तुम्हारा टेस्ट केस क्रिएशन करने के बाद या कोडिंग के बाद तुम्हारे हाथ पे टेस्ट डेटा भी आ जाए, तो यू कैन फ्लुएंटली डू द टेस्टिंग, करेक्ट? दिस इज अ ड्रॉबैक, करेक्ट?
सो ये रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग में यही सारी चीजें डिस्कस होती है. एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट दे विल सिट टुगेदर, दे विल से ओके दिस इज द प्रोसेस वी आर फॉलोइंग, दिस इज रॉन्ग, this is bad, this needs an improvement. Why? Because of this is the consequences we have faced. And also they will discuss कि हाँ हम लोगों ने ये काम किया और इसकी वजह से हमारी टेस्टिंग और डेवलपमेंट में काफी हेल्प हुई, कोऑर्डिनेशन में काफी हेल्प हुई. तो बेसिक आइडिया इज दैट दे विल डॉक्यूमेंट दिस in this retrospect meeting. They will document this, they will create a document, they will create two columns, one is good things, another is bad things. They will write down each and every point in good things, they will write down each and every point in bad things. ठीक है, जो भी उनको लगता है they will write down and they will create a retrospect document, good things और bad things. क्यों करते हैं हम लोग ये? देखो जब भी स्प्रिंट प्लानिंग होती है, यू बिफोर यू स्टार्ट योर स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग यू रिफर दैट पर्टिकुलर रेट्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट. पहले रेट्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट देखते हो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में, फिर स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग चालू होती है. रेट्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट में जो गुड थिंग्स होती है उसको तुम री इम्प्लीमेंट करना का ट्राई करते हो इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट जिसकी तुम स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग कर रहे हो, और बैड थिंग्स को अवॉइड करने का प्लान करते हो, अवॉइड करने का ट्राई करते हो. गॉट इट? रेट्रोस्पेक्ट क्यों होता है? इस स्प्रिंट में जो भी सही चीज और गलत चीज की है उसको रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए मीटिंग, रेट्रोस्पेक्ट मीटिंग इसलिए होता है. इसमें हम लोग क्या करते हैं, गुड थिंग्स और बैड थिंग्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, उस डॉक्यूमेंट को हम लोग रेट्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट बोलते हैं. और बेसिकली ये हम लोग हर दूसरी स्प्रिंट पे रिफर करते हैं पिछली स्प्रिंट का रेट्रोस्पेक्ट डॉक्यूमेंट, और मेक श्योर करते हैं कि गुड थिंग्स को हम लोग री इनहेरिट करें और बैड थिंग्स को अवॉइड करें. एवरीवन इज क्लियर? अजाइल इज फिनिश्ड. कोई क्वेश्चन? सबको समझ में आया मैं क्या बोला? Yes, no, do I need to repeat anything, guys? Sir. Yeah, that was a yes sir, right? तुम्हारा आवाज कटता है, सर बस सुनाई देता है, yes no सुनाई नहीं देता है. Everyone clear, right? Clear, Yes. This is very Yes, sir. important. आशीष, रामचरण, शुभांकर, अंजलि, अपूर्वा, Yes, sir. वीराना. चलो ठीक है. देखो एक बार में सब कुछ याद नहीं होगा. I would recommend you to go through this particular lecture at least twice. देखो, try to make documents of your own. Agile is very important. अगर तुम experienced हो तो और ज्यादा important है तुम्हारे लिए. ठीक है, तो try to do this, try to make sure everything is done properly. And whenever you are explaining Agile, no, अगर experience हो तो ऐसे मत बताओ then testing team will do this, then development team will do this, ऐसे बताओ. then I am doing this, we used to do this. तो थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन मत करना, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना, ताकि उसको समझ में आए कि तुमने काम किया है इसमें. ठीक है, यू एक्जैक्टली वर्कड ऑन दिस पर्टिकुलर पीस. ठीक है, आर वी क्लियर? Yes, sir. चलो ठीक है, हैव अ गुड डे. अजाइल इज ओवर. तुम्हारा एसटीएलसी और टेस्ट प्लान बचा है, दोनों ही थ्योरी है. एसटीएलसी मोस्टली तुमको पता है क्या होता है, तो यू आई जस्ट नीड टू लाइक एक्सप्लेन द स्टेप्स, तो तुमको समझ में आ जाएगा. उसके बाद टेस्ट प्लान करेंगे. टेस्ट प्लान पूरा ही थ्योरी है तो थोड़ा सा बोरिंग होगा वो, बट हाँ वो भी हो ही जाएगा एक और क्लास में. ओके, सी यू गाइज ऑन मंडे देन. ओके, हैव अ ग्रेट डे. Yes, sir. रिवाइज करो, बताना मेरे को कोई दिक्कत हो. हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? No, sir. नहीं बोलोगे? Well, have a great day. या cool. चलो ठीक है, बाय बाय गाइस.